Hello student, Jai Swaminarayan. Today we study with the chapter number 9 valuation, unit number 9 valuation, methods of calculating the depreciation. The various methods of calculating the depreciation are as follows: straight line method, constant percentage method, sinking fund method, quantity survey method. First one, straight line method. In this method, it is assumed that the property loses its value by the same amount every year. That means every year same amount of जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी की फॉर एग्जांपल जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें अमाउंट में सेम हर बरस पे यानी एवरी ईयर सेम अमाउंट उसमें उसकी वैल्यू घट रही है. सेम अमाउंट दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज उसका वैल्यू घट रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी वही वैल्यू घटेगा, अगेन नेक्स्ट ईयर भी वही वैल्यू घटेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड. ए फिक्स अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल cost is deducted every year so that at the end of the utility period only the scrap value is left. Annual depreciation is equal to annual decrease in the value of the property. D is equal to C minus S divided by N, where D is the annual depreciation, then C is equal to original cost, S is equal to scrap value, then N is equal to life in years. Depreciation of the property after M years is equal to C minus S into M divided by N. That means M into D. Book value after M years is equal to C minus S into M divided by N. That means C minus M into D. The next one is constant percentage method or declining balance method. In this method, it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning of In this method, it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning of every year. Okay. Then by this method, decrease in the value of the property in the beginning years is faster rate, while the decrease in the value in the later years is at the slower rate. By this method, decrease in the value of the property in the beginning years is the faster. That means प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट कम होती है, बट डिक्रीज इन द वैल्यू ओके वैल्यू डिक्रीज होती है पीछे के जो ईयर्स होते हैं एज नियर टू द स्क्रैप वैल्यू, तो तब उसका रेट जो डिक्रीज होने का जो रेट है वो कम हो जाता है लास्ट में. This method is more suitable for calculating the depreciation of the machines. Percentage rate of the annual depreciation P is equal to 1 minus S divided by C raised to 1 divided by N, where P is equal to percentage rate of annual depreciation, S is equal to scrap value, C is equal to original cost, N is equal to life in years. Methods of calculating the depreciation. In age of property is M years. Value of property after M years after depreciation is equal to C into S divided by C raised to M divided by N. Okay. This formula does not hold good when scrap value is equal to 0. The next one is sinking fund method. In this method, the depreciation of the property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the sinking fund for that year. ओके तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, सिंकिंग फंड क्या है, वो आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे. बट इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज assumed to be equal to the annual sinking fund plus interest on the sinking fund for that year. Depreciation is equal to annual sinking fund plus interest on the sinking fund for that year. If N is equal to annual sinking fund, then B, C, D, etc. interest on the sinking fund for the subsequent year, and C is equal to original cost.
life in years 1 2 3 4, the annual sinking fund AAA, then interest on the sinking fund BCD. तो क्या आएगा depreciation for that year A plus B, A plus C and A plus D. Total depreciation is equal to A plus 2A plus B plus 3A plus B plus C plus 4A plus B plus C plus D. Okay, then book value is equal to C minus A. C माइनस जो भी है C माइनस A, C माइनस 2A प्लस B, C माइनस 3A प्लस जो भी ये वैल्यू है वो C में से डिडक्ट करना है एंड सो ऑन. C क्या है? C is the original cost. Methods of calculating the depreciation में if I is the rate of interest annual sinking fund installation to accumulate 1 rupees in n years, then P is equal to I divided by 1 plus I raised to n minus 1. If I is the rate of interest and 1 rupees is deposited every year, total sinking fund accumulated at the end of the n years is Q is equal to 1 plus I raised to n minus 1 divided by I. Therefore, the rate of the depreciation in n years P into Q percentage. Okay, important definitions. बुक वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, सिंकिंग फंड क्या है. तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट बुक इन दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट लेस द टोटल डेप्रिसिएशन टिल दैट ईयर. Then scrap value. It is the value of the dismantled material of the property at the end of its utility period. The scrap value of the building may be about 10% of its total cost of construction. Then sinking fund. It is an amount which has to set aside at fixed interval of time, say annually, out of the gross income, so that at the end of the usual life of the property, after that means जो भी हम एक साइड पे की वैल्यू रखते हैं और मनी अमाउंट रखते हैं. ओके, जिससे उसकी लाइफ जब भी जो भी प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है उसकी जब भी लाइफ वो खत्म हो जाए तो उस टाइम पे वो काम में लगे. यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग और ए प्रॉपर्टी, द फंड शुड accumulate the initial cost of the property. Example. The cost of a newly constructed building is rupees 1 lakh. Life of the building is 60 years. Scrap value is 10% of the cost of the building. Using straight line method calculation, the book value at the end of the 35 years. Okay. आपको क्या फाइंड आउट करना है? बुक वैल्यू फाइंड आउट करना है. कौन सी मेथड यूज करनी है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करनी है. तो यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट है सी 1 लाख रुपीज है. देन स्क्रैप वैल्यू आपको दिया है. स्क्रैप वैल्यू इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कितना है? 1 लाख है. उसका 0.1% लेना है. दैट मीन्स 10,000 रुपीज. Therefore, by straight line method, annual depreciation D is equal to C minus S. C minus S divided by N. C का वैल्यू कितना है? 1000 है. S का वैल्यू कितना है? 10,000. 1 लाख है C का वैल्यू एंड S का वैल्यू कितना है? 10,000 है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 60 है. ओके, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 60. तो क्या आएगा? डी का वैल्यू 1500 रुपीज. दैट मीन्स 1500 रुपीज. टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर 35 ईयर्स कितना आएगा? 35 इंटू 1500 दैट मीन्स 52,500 रुपीज. बुक वैल्यू आफ्टर 35 ईयर्स तो कितना आएगा? बुक वैल्यू आफ्टर 35 ईयर्स है तो 1 लाख रुपीज तो है. ओके, माइनस उसमें क्या ऐड करना है? 52,500. दैट मीन्स आंसर इज 47,500 रुपीज.
तो आपको 60 ईयर का फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो टोटल कॉस्ट कितना है 1 लाख है। 35 ईयर के बाद कितना वो उसका वैल्यू है। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 52,500 है। तो बुक वैल्यू क्या आएगा? तो बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या आएगा? टोटल डेप्रिसिएशन. Okay, that is 52,500. The answer is 47,500. Example number 2. A motorcycle purchased for rupees 30,000. Its life is 30 years and salvage value is 10%. Calculate the annual depreciation by straight line method. Calculate book value at the end of the each year for 4 years. तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट दिया है 30,000 बराबर. स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10% लेस करना है. साल्वेज वैल्यू सॉरी और स्क्रैप वैल्यू. एंड स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 0.1 इंटू 30,000 दैट मीन्स 3,000 रुपीज. एंड इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 ईयर्स आएगा. ओके. So the life is 30 years and salvage value is this. Calculate the book value of the end of the each year for 4 years. N is equal to 10 years. So 10 year माटे annual depreciation C minus S divided by N, that means 2700. तो अपने अभी क्या करना है हमें? 40 तक ईयर 01. तो पहले तो 4 ईयर के लिए फाइंड आउट करना है. 4 ईयर और इसमें क्या है? 30 है. तो 4 ईयर के लिए नंबर 1 2 3 4 है. डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 2700 रुपीज. ओके. तो क्या आएगा यहाँ पे? द लाइफ इज 10 ईयर्स ऐसा बोल सकते हैं. तो आगे भी क्या था? The life is 60 years. तो इसमें क्या आएगा? The life is 10 years. એટલે 0.1 into 30,000 that means 3,000 and is equal to 10 years. So annual depreciation क्या आएगा? C minus N divided by N, that means 2700 rupees, 2,700 rupees. Okay. Then book value at the end of the each year. तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट में 2700. Then next 30,000 book value है. तो 30,000 minus 2,700. तो 2,700 क्या आएगा? 27,000. 30,000 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? बुक वैल्यू 27,300. अगेन 27,300 में से 5400 निकालो तो क्या मिलेगा? 24,600. 24,600 है. उसमें से माइनस 8100 निकालेंगे तो ये मिलेगा. इसमें से ये निकालेंगे तो ये मिलेगा. Example 3. Building was constructed for rupees 1 lakh before 20 years. Life of the building is 80 years. Calculate the total depreciation neglecting the scrap value. Take the rate of interest as 6%. Here the total cost C कितना दिया है? 1 lakh rupees दिया है. Number of year that means life of the building is 80 years. Scrap value 0 है. I that means percent rate of interest कितना है? 6% है. That means 0.06. तो sinking fund coefficient for 80 years. sinking fund coefficient मुझे फाइंड करना है for 80 years. तो क्या आएगा? P is equal to I into 1 plus I raised to n. आपके पास सब भी वैल्यू है उसमें रख दो तो कितना मिलेगा? 0.000573. Then if the rate of interest is 6% and rupees 1 is deposited every year, amount accumulated in 20 years. Okay. If rate of interest is 6 years,
एंड अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन 20 ईयर, तो कितना आएगा Q इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 इंटू आई, तो 20 ईयर के लिए कितना आएगा 36.78. तो दैट फॉर द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज 20 ईयर इक्वल टू P इंटू Q, तो कितना मिलेगा 0.0211, दैट फॉर 20 ईयर्स. Total depreciation C into 0.0211, that means 1 lakh into 0.0211, that means 2110 rupees. Okay. Example 4. A needle purchased for rupees 24,000. If after 6 years its scrap value is rupees 6,000, calculate the amount of annual depreciation. Rate of interest is 5% by straight line method, constant percentage method, sinking fund method. Okay. Solution. First one is straight line method. Cost कितना है 24,000 है, scrap value कितना है 6,000 है, number of years कितना है 6 है. Therefore annual depreciation D is equal to C minus S divided by N. C का वैल्यू कितना है 24, सब वैल्यू इसमें रख दो तो आंसर क्या आएगा 3,000 रुपीज आएगा. Annual depreciation is rupees 3,000. Book value at the end of the year is calculated in table. तो ये लाइफ कितना है 6 ईयर है, 0 से स्टार्ट करो अप टू 6. फर्स्ट में डेप्रिशिएशन कितना होगा 0, दैन आफ्टर 3,000 डेप्रिशिएशन है. टोटल डेप्रिशिएशन कितना है 3. ओके, तो स्टार्टिंग में 3, फिर एक्यूमुलेट करते जाओ. 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18. Okay, then the book value and the end of the year is equal to कितना आएगा. तो बुक वैल्यू के लिए बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आएगा, दैट इज 24,000. 24,000 इनिशियल वैल्यू है, उसमें से 3,000 कट करो तो कितना आएगा लास्ट में 6,000 आएगा. ओके, 24,000 क्या है कॉस्ट. देन कांस्टेंट परसेंटेज मेथड. रेट ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन C इज इक्वल टू 1 माइनस S डिवाइड बाई C रेज टू 1 डिवाइड बाई N. S है, C है, N का वैल्यू है, वो सब रख दो तो आपको क्या मिलेगा. 12 फॉर डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा 24,000 इंटू 0.2064, कितना मिलेगा 4948.8, that means 4949 rupees है. Therefore the book value at the end of the first year कितना आएगा 24,000 माइनस 4949, जो भी डेप्रिसिएशन है उसको डिडक्ट करो तो 19,051 रुपीज़. ओके, डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर के लिए करना है तो 19,051 इंटू अगेन वापस क्या करना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है 0.2062, तो कितना आएगा 3,929 रुपीज़. देन बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 19,000 माइनस 3,929, तो क्या मिलेगा 15,122 रुपीज़. दैट मीन्स 15,122 रुपीज़. तो योर लाइफ देन एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 4,949. ओके, then next 3,929. Three one one eight three four seven five 19651560. टोटल डेप्रिसिएशन दिस प्लस दिस करो तो ये मिलेगा, दिस प्लस दिस करो तो ये मिलेगा, दिस प्लस दिस करो तो ये मिलेगा, ये इसमें ये ऐड करो तो ये मिलेगा, इसमें ये ऐड करो तो ये मिलेगा, इसमें ऐड करो तो ये मिलेगा. देन द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 24,000 में ये सब डिडक्ट करो तो लास्ट में क्या आएगा 6,004. सिंकिंग फंड मेथड. हियर तो C माइनस है 24,000 minus 6,000, that means 18,000 rupees. N is equal to 6, I is equal to 5%. Therefore annual installment of the sinking fund is equal to I bracket में C minus S into N divided by 1 plus I raised to N minus 1. That means 18,000 into 0.05 divided by
1 plus 0.05 is to 6 minus 1, that means 2646.31 rupees. Calculation of the interest, here n is equal to 1, interest आएगा तो 0.05, तो आपको क्या मिलेगा 2646.31 इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, तभी 2 करो तो 5424 आएगा। तो इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है, तो किससे मिलेगा इंटरेस्ट, तो दैट इज 5424.93 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2646.31, दैट मीन्स 132.3। तो उसी तरह से 4th ईयर के लिए करना है, 3rd ईयर के लिए करना है। Interest for 2nd year, this one is 2nd year, not 3rd year. थर्ड ईयर के लिए सेम प्रोसीजर है। एंट्री जगह पे क्या रखना है, आपको 3 रखना है और जो भी वैल्यू रखनी है, और 8324 में से 3 इंटू 2646.31, अगेन वो 4th के लिए सेम ही है, और सेकेंड 4th के लिए 5th के लिए 6th के लिए सेम ही प्रोसीजर है। ओके, तो उसकी वैल्यू जो भी आई वो टेबल में रख दो। तो 2646.31 है। ओके, फर्स्ट इंटरेस्ट 132 पॉइंट, जो भी इंटरेस्ट आया यहाँ पे लिख दो। टोटल एप्रिसिएशन 2646 मिला। दिस प्लस आपको टोटल एप्रिसिएशन इन रुपी, तो 2646, हाँ ये अलग अलग ईयर के लिए हमने फाइंड आउट किया है। 18,000 वो सब, तो वो सब यहाँ पे रखना है। फिर हमारे पास 132 पॉइंट, ये सब भी हमने फाइंड आउट किया है। इसमें से ये डिडक्ट करो तो ये मिलेगा, ये डिडक्ट करो तो ये मिलेगा। उस तरह से हमें क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट कितना है। ओके, थैंक यू।